है ठीक से समझो यार right that's what so today we are going to discuss next topic that is marine resources marine marine see the pace at which the industrialization and economic development has been for the past few decades the land-based resources porous land-based resources are nearing the exhaustion. So man has started looking towards a new frontier that is ocean as a major source of resource. Now, oceans no doubt account for bulk of the resource, but still nations lag behind in terms of technology for exploiting these resources efficiently. But some of the resources are being exploited on large scale, but some still others, the other resources need more latest technology for their commercial viability. In this process, basically, when the land-based resources are nearing its exhaustion, so oce- man has started looking towards ocean. In fact, if you ocean water itself contains all the 111 elements, and number of these elements are extracted from the ocean water itself. Chromium became a cheap metal only when once we learned the art of extracting chromium from water. Apart from this, these resources are found embedded on the ocean floor, on the shelf, slope, and deep sea plane. If we marine resources, there are two types of resources found in sea. They can be divided into two categories. One is living resource, and second is non-living resource. Non-living resources, in turn, can be classified in two categories: mineral resources and energy resources. Energy resources in turn can be classified in two categories: renewable resources on renewable resources. See, there is no harm in tapping the resources, but the point is these resources be exploited without adversely impacting the marine ecosystem. And secondly, while exploiting these resources, adequate care must be taken that the water does not get adversely impacted by the pollutant arriving from exploitation of these biotic resources. Basically, sea has been always been a major source of food supply for human ones. Coastal communities have been overwhelmingly dependent on oceans for their food supply. If we see biotic resource that is living resource, then ocean is almost inexhaustible supplier of living resource. There are four zones where the biotic resources are found in abundance. One is equatorial water, second is polar water, third is cold upwelling zones, and fourth is mixing zones of cold and warm current. There are four areas in ocean where the biotic resources are found in abundance. These are the four zones: waters, polar waters, cold upwelling zones, and zones of mix of warm and cold current. Now, biotic resources can be classified in three categories: planktons, second nectons,
and third, benthos. Benthos. So biotic resources can be classified into three categories. Planktons happen to be the most important biotic resource. These are microscopic marine organisms. These are microscopic marine organisms which happen to be the chief food for fishes. They have high nutrient value. High nutrient value. They are the chief for fish. Therefore, these planktons are known as marine pastures, समुद्री घास के मैदान, because they happen to be the chief for the fishes and other marine life, and basically they are having high nutrient value. They are confined to the upper photic zone. Planktons are found in upper photic zone where sunlight penetrates. They are broadly classified into two categories: phytoplanktons and planktons. Phytoplanktons are autotrophs which prepare their food on their own. दो ही ऑटोट्रॉप है धरती पर. One is phytoplanktons, another is chemotrophs. Autotrophs and chemotrophs are the only two organisms which prepare their food on their own. Chemotrophs are found in deep trenches. They oxidize inorganic substances into organic substances. So planktons are of two types. Phytoplanktons happen to be autotrophs. They prepare their food on their own. There are two phytoplanktons which are of immense value for man. One is red algae, which is used as for making medicines for cancer. And second is diatom, richest source of protein on this planet. It is 77% protein. It is the chief food for fish, and fish is consumed by man. Allah, it's not directly consumed by man. Diatom is chief. हम digest ही नहीं कर पाएंगे उसको. Diatoms are consumed by fish, and fish consumed by man. So this diatoms and red algae are very important phytoplanktons, which are a very important marine resource. Second is zooplankton. Among zooplankton, small crustacean, crustacean jellyfish. It is not a fish. It is plankton. Small crustacean jellyfish. Small crustacean jellyfish. It is as both food and medicine for man. It is used as both food and medicine for man. It is a rich source of vitamin A, vitamin D, and vitamin E. So planktons or phytoplanktons are very important. Planktons are also very important marine resource. Second is nectons. पहला तो planktons हो गया. Second is nectons. We are discussing biotic resources. Biotic resources को पार्ट में डिवाइड किया: planktons, nectons and benthos. Nectons are those marine organisms which have the capability of self locomotion, can move on their own. Those marine organisms which have the capability of self
motion, self movement are known as nectons. Among them, fish is very important. Fish is very important necton. If you see, out of total protein consumed by man, 27% of protein comes from, मतलब धरती पे जितने भी हम इतने बकरा मुर्गा खाते हैं, they exist nothing in front of fishes. The consume heavily worldwide. मतलब if you see nectons, तो nectons में दो आते हैं. One is fishes, second is mammals. Fishes happen to be the chief source of protein. They are in turn basically 27% of protein consumed by man is provided by fishes. Fishes में भी दो variety होती हैं. One is those fishes which are found in photic zone, that is pelagic fishes. Pelagic. And second is demersal. Demersal, these fishes are found in deep sea. Pelagic fishes, they are found in photic zone, like anchovies, salmon, herring. Very important. These fishes are consumed on large scale. These fishes are consumed on large scale. Anchovies, salmon, herring. These are those fishes which are found in photic zone. Then demersal fish, they are found in aphotic zone, in deep water. They are मतलब तुमको देखोगे demersal fishes are found in groups. Cod is very important. मतलब you see cod liver oil 7Cs की एक शीशी आती है. Cod is immensely rich in Cod liver oil is immensely rich in vitamin A, provide immunity. It is immensely rich in vitamin B12, very good for heart, very good for blood pressure, very good for containing strokes, very good for Alzheimer. Okay, vitamin B12 is very important. Cyanocobalamin. It is very important. Cod happens to be the chief source. मतलब ये इसकी इम्पोर्टेंस ओवर एम्फेसाइज कर ही नहीं सकते. कॉड फिशिंग तुम नॉर्वे में देखो. नॉर्वे यूज कॉड को फ्रॉम स्टेवेंजर टू हैमरफेस्ट all along the coast of Norway and Lofoten Island, world renowned for cod fishing. The north में भी cod fishing, डॉगर बैंक में भी cod fishing या ग्रैंड बैंक में भी cod fishing. लेकिन नॉर्वेजियन कोस्ट में it is exclusively done and Lofoten Island is known for cod fishing. Now, third, second, mammals. Among mammals, dolphins and blue whale. भाई डॉल्फिन्स की इंपॉर्टेंस को आप नकार ही नहीं सकते. सबमरीन के इन्वेंशन से पहले डॉल्फिन्स वर यूज एज स्पाइज बाय केजीबी, रशियन स्पाई एजेंसी यूज. डॉल्फिन्स स्मार्ट क्रिएचर है ही नहीं. डॉल्फिन्स आर सो इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड यू इनसाइड आउट. मतलब हमारे बच्चे भी उसके साथ खेलेंगे तो उसके साथ खेलती रहेगी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. मतलब दे आर सो स्मार्ट एनिमल्स. वो स्पाइंग के लिए यूज करते थे. आजकल मछुआरे मछली पकड़ने के लिए यूज करते हैं. दे आर यूज फॉर लोकेटिंग स्वार्म्स ऑफ फिशेज. दे आर यूज एज काउबॉयज. ओशन रेंचिंग, मतलब कहाँ ये समुद्र में जाते हैं, पता लगा लेते हैं कहाँ मछलियाँ हैं, ऊपर आके मछुआरे को बता देते हैं, मछुआरा जाल के जाल डाल देता है. Dolphins are used for ocean ranching. They are used as cowboys for locating the swarms of fishes. ये तो multiple uses है. Next to humans, smartest creature on this planet is dolphin. The blue whale है the largest creature. Is the largest creature. अभी मतलब डायनासोर्स के बाद अब यही सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिएचर बचा है.
और ब्लू व्हेल के मल्टीपल यूसेज है। ब्लू व्हेल का फैट, मीट, फर, सब कुछ। व्हेलिंग जापान में आज भी बैंड नहीं है। घुटनों का दर्द होता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है, जापान में कभी कोई नहीं कराता। व्हेल ऑयल इतना गर्म होता है। एक्चुअली अर्थराइटिस में क्या होता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो ऑयल निकलना बंद हो जाता है। तेल लगा दो तो अपने आप बोन्स ऑयल सिक्रीट करने लगती हैं। व्हेलिंग वर्ल्ड वाइड बैंड है, लेकिन जापान स्टिल परस्यू इट। ब्लू व्हेल का लार्जेस्ट क्रिएचर, मतलब इसका फैट, मीट, इट इज अ कीस्टोन स्पीशीज, टॉप प्रेडेटर। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी मेरीन इकोसिस्टम। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरा मेरीन इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इट इज द टॉप प्रेडेटर, इट इज द कीस्टोन स्पीशीज। इट्स defecation is nutrient for phytoplanktons, or phytoplanktons is food for most marine organisms। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस हर तरीके से है। मतलब इसका जो डिफिकेशन है वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए, और फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर पूरी मरीन लाइफ डिपेंडेंट है। तो मतलब दिस ब्लू व्हेल इज important itself, as well as it is a very integral part of marine ecosystem. It is responsible for maintaining healthy marine ecosystem. और third biotic resource, that is benthos। benthos कहते हैं ऑर्गेनिज्म बॉटम पे रहते हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रहें या स्लोप पे रहें या डीप सी प्लेन पे रहें। benthos आर बॉटम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो समुद्र के तल पे रहते हैं, वेदर दे लिव ऑन शेल्फ और स्लोप और डीप सी प्लेन, दे आर benthos। they are divided into two categories: mobile benthos, and second is immobile benthos। mobile benthos, crabs, snails, lobsters। नाश्ते में खाना खाते हैं, केरल, तमिल केरला, आंध्र प्रदेश जाओ, coastal states you go, they happen to be the chief crab, snails and lobsters, chief food, nutritious food। immobile benthos में ऑयस्टर्स, मोती देने के अलावा दे आर ऑल्सो, देयर मीट इज ईटन, कोरल रीफ्स for construction purpose, otherwise they are very important ingredient of marine ecosystem। they absorb carbon dioxide, contain global warming। और sponges, फ्लोरिडा के पास बेसिकली एंड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फ्लोरिडा कीज कहते हैं इनको, फ्लोरिडा कीज। स्पॉन्ज इंडस्ट्री, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग eel grass, a very important for the medicine for cancer। So this was all about biotic resource। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही जितना एग्जाम में लिखना होता है, इतना भी लाइन है, बस दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, एबायोटिक रिसोर्स। कॉन्टिनेंट शेल्फ, डीप सी, this is deep sea plane। abiotic resources में first we'll discuss mineral resource। mineral, these are found as endowments embedded in the ocean floor। certain minerals are found just on the
surface of the ocean bottom. They are found just surface deposits इनको कहते हैं. Certain minerals are found deep buried inside the earth. Those are known as subsurface deposits. जैसे coal, oil, natural gas are subsurface deposits, whereas certain minerals which are found on the surface, they are known as surface deposits. On oceans, we have certain deposits like light, magnesite, ilmenite, siderite, zircon. On shelf, these are found on continental shelf. Monazite is ore of thorium. 50% of these deposits are found along the coastal plains of India. East coastal plain and west coastal plain. Maximum along the Malabar coast. तभी तो Indira Gandhi started fast breeder reactor. Now it is almost ready. It will use thorium to breed uranium. So thorium is found in abundance in India. 50% world के deposit. Magnesite is the ore of magnesium. It is found in abundance along the coast of Africa and USA. It is found in abundance. Magnesite, ore of magnesium, Africa और USA की shelf में is found in abundance. Ilmenite, it is the ore of titanium along coastal plains of India. Bulk of its ilmenite, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh coast मिलता है. Coastal plains of India. Siderite, siderite actually iron के चार और होते हैं, magnesite, hematite, siderite, limonite. Siderite is ore of both copper as well as iron. It is ore of both copper and iron. It is found in abundance along the coast of South Africa, especially Durban coast. Durban, along the continental shelf of Durban coast, South Africa. Zircon, known as American diamond. American diamond. ये गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको. Here it is found in abundance. Zircon, American diamond. It is found in abundance along the coast of Gulf of Mexico. These were the surface deposits found, mineral deposits found on continental shelf. Buried deep inside the surface are found subsurface deposits, again continental shelf. Surface deposits पे तो ये minerals मिलते हैं, but buried deep inside the surface find energy deposits like coal, oil and gas. Buried deep inside the surface below continental shelf. Continental shelf में deep inside the surface find coal, oil and gas. Coal नॉर्थ सी में भी मिलता है कोल, वैसे along African coast also you get coal. लेकिन साउथ वेल्स जो हंटर वैली है of Australia, New South Wales state of Australia, Hunter Valley, there you find coal deposits buried below the continental shelf. Huge. लार्ज अमाउंट ऑफ कोल और भी जगह मिलता है, डरबन अफ्रीका है, नॉर्थ सी और भी बहुत जगह है, लेकिन साउथ वेल कोस्ट ऑस्ट्रेलिया की है ना, देयर यू फाइंड कोल इन लार्ज अमाउंट. ऑयल
नॉर्थ सी ऑयल, ऑयल जिसे ब्रेंट क्रूड ऑयल कहते हैं हम लोग, बेसिकली इट इज एंटायरली कन्फाइंड टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ. बेस्ट क्वालिटी ऑयल ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ सी ऑयल, it is found entirely in continental shelf. Mumbai high, again it is a Mumbai high, it is on continental shelf. The Gulf of Mexico, this is basically Mexico, Gulf of Mexico, Gulf Mexico. Here you find in USA also, from Louisiana, Alabama, Texas, oil deposits. Here also on continental shelf you have oil deposits. Tampico, Pan, Veracruz are all oil fields. Rio de la Plata estuary, South America, Plate estuary. Here huge oil and gas deposits are found. Matlab here these oil and gas are being found in shelf, continental shelf region, buried deep inside. These are subsurface deposits. Oil, coal, oil, gas are subsurface deposits found deep, buried deep inside the surface. On slope, continental slope after continental shelf, the steep surface, that is the continental shelf. Below continental shelf, here this is continental slope. On continental slope you find sulfur, find manganese, phosphate, nitrate. Sulfur is found in abundance along the Gulf of Mexico, coast of USA. Manganese, it is found in abundance along the coast of South Africa and Brazil. Phosphate along the coast of Peru in South America. Nitrate along the coast of Chile, along continental. On deep sea plain, every country go for mining of polymetallic nodules or polymetallic sulfide. Polymetallic nodules are potato shaped large chunks of rocks which contain different minerals. Polymetallic nodules are immensely rich in manganese, iron, copper, gold. In Indian Ocean, nickel and zinc is also found in abundance. Indian Ocean में वैसे तो polymetallic nodules this order they have maximum manganese, iron, copper, gold. ये potato shape के होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं. Find ores of these minerals, these metals. Or in Indian Ocean, this zinc and nickel is also found in polymetallic nodules, large amounts. So this was about mineral resources and basically found on the continental shelf. Now let us come on to energy resource. What all energy resources are found? How ocean inexhaustible supplier of energy resources. बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़े थोड़े उतने में आंसर प्रो हो जाता है. एनर्जी, एनर्जी फर्स्ट. It is an isotope of hydrogen. Oceans contain 25 trillion tons of deuterium. Ever mankind becomes successful in harnessing the energy by way of nuclear fusion reaction, by fusing tritium and tritium. अगर भगवान की मर्जी से हम कंट्रोल
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने में सफल हो गए तो हमें किसी और एनर्जी होती नहीं है। 25 ट्रिलियन टन्स। अरे 1 किलो इतनी एनर्जी देगा कि हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ट्रिलियन टन्स है। by if once we succeed in having controlled nuclear fusion, फ्रांस में चल रहा है, तो और ये एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस हीलियम निकलता है अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओशियंस विल बी इनएग्जॉस्टिबल सप्लायर ऑफ हीलियम। चलो ये तो हम सक्सेसफुल हो जाए तब। फिलहाल सेकंड सोर्स, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक एनर्जी। नाउ व्हाट हैपेंस, I discussed the surface water is warm. The surface water is warm. The upper photic zone warm, where ocean currents are found, is known as epilimnion. Warm photic, its thickness is about 300 feet. 300 feet thick. Followed by thermocline. Thermocline, where rapid rate of temperature change takes place. Rapidly temperature decreases, and bulk 90% of the water is cold static water as hypolimnion. This is aphotic zone. Aphotic, cold static water. Now this is cold, this is warm. Between thermocline, rapid rate of temperature change takes place. Whenever the temperature difference between this warm circulating layer and the cold static layer, hypolimnion, if this temperature difference is 20 degree or more, in that case the rate of change of temperature is in thermocline is so fast that this temperature gradient prevailing in thermocline is generating photic energy. Matlab, if the temperature difference between thermocline, epilimnion and hypolimnion is 20 degree or more, then the temperature gradient, rate of change of temperature prevailing in thermocline, is used for generating photic energy. What an irony for India! Since 2014, since it has come, in India, for 2,000 kilometer long coastline along Kerala and Tamil Nadu, this temperature difference between epilimnion and hypolimnion is far more than 20 degrees throughout the year. If we harness OTEC energy along the coastal waters of Kerala and Tamil Nadu, it can fulfill the complete need of all southern states. Keval those are. Government of India has not initiated till date. Why? Because solar energy और wind energy में हम लोग कर रहे हैं. Solar energy and wind energy combined, they cannot fulfill the need. अभी present जो what capacity you have developed, they cannot fulfill the need of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala completely. Household needs, commercial needs, सब नहीं कर पाएंगे. But since solar and thermal technology is developed by Western nations, बढ़िया सोलर पैनल ले आते हैं, वो बना देते हैं, हम ले आते हैं. विंड टर्बाइंस बढ़िया बना देंगे, हम ले आएंगे. लेकिन ओटेक एनर्जी दे डोंट नीड इट बिकॉज वहां पर पोटेंशियल ही नहीं है. अराउंड केरला एंड तमिलनाडु इट्स नियर इक्वेटर, surface water is always warm. So this potential is inherently in tropical countries, and tropical countries are developing countries. None of them has developed efficient OTEC technology. Government says it needs huge investment. अरे भाई, research and innovation always needs investment. इंडिया, जैसे हम कहते हैं इंडिया 10 साल बाद सुपर पावर बन जाएगी, इंडिया 20 साल बाद भी सुपर पावर नहीं बनेगी. आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट.
Total investment in research and development in India is 0.3% to 0.8% of GDP. India, unless a country starts investing in research and development and innovation, it cannot become a global leader. सवाल ही नहीं उठता. हम कभी अपना विंडोज नहीं बना पाएंगे, कभी अपना हम केवल कॉपी पेस्ट करते रहते हैं. चाइना, as of now, its GDP and its investment in research and development is 5% of GDP. 2020 में था 2.5%. चाइनीज जीडीपी इज ह्यूज, उसका भी 5%. अरे भाई, थिंक क्वांटम टेक्नोलॉजी में फंड एलोकेशन चाइना ने किया, इट इज $15 billion. China on one side, rest of the world on one side. Still, China's investment is more than rest of the world. In quantum technology, China has developed its own lithography machine. तो चिप्स बनाते हैं, उसने अपनी बना ली. अब इससे पहले तक तो हॉलैंड की जो कंपनी थी वही बनाती थी. China has developed its own. China is investing in space in every sector. China is investing heavily in research and development. पहले उसने कॉपी पेस्ट किया, बट इन इंडिया स्टिल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ले दे के एक वही था. गवर्नमेंट नॉट द प्राइवेट सेक्टर इज एडिक्वेटली इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये ओटेक एनर्जी हम हार्नेस कर लें तो सदर्न 5 स्टेट्स हैं, उनकी कंप्लीट एनर्जी नीड्स एंड सरप्लस कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सदर्न ग्रिड टू नॉर्दर्न ग्रिड. और ये फ्री सप्लाई है, फ्री सप्लाई ऑफ एनर्जी. वंस इट इज इंस्टॉल्ड, इट विल कंटिन्यू टू. हम, मैं टाइडल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइड आए चले गए, बैठे रहो फिर. लेकिन दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई. कुछ सोचते हैं जिसपे टू मेक इन इंडिया, नीति आयोग पूरा पढ़ लो. गवर्नमेंट हैज नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल पेनी इन ओटेक एनर्जी. और इसका रीजन भी दिया है, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग. ऐसा कौन सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो ओवरनाइट हो जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स इट वोंट यील्ड फ्रूट्स ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम. But once you become innovator, you are master of it. You have the patent, you have the trade related intellectual property right, you have the property right of that. लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट. मैंने पूरी पढ़ डाली, फिर लास्ट में एक नीति आयोग में लिखा था, टेक एनर्जी रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी. इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. यहाँ पर जर्मनी इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, क्योंकि जर्मनी के पास ट्रॉपिकल सीज है ही नहीं. ये स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि हमको खुद ही फुलफिल करनी पड़ेगी. वी नीड टू इनोवेट एंड रिसर्च एंड डेवलप आवर ओन टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग दिस ओटेक एनर्जी. एक 80s में एक कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में एक प्लांट आईआईटी मद्रास के बच्चों ने आया था, पायलट प्लांट एट कुलशेखरपट्टनम. वही एक पायलट प्लांट है, उसके अलावा ओटेक एनर्जी में कोई काम नहीं हुआ. वर्क हैज बीन डन बिकॉज इट, एनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स इन्वेस्टमेंट. ओटेक एनर्जी नहीं है. India has long line wave energy. Waves are oscillation in water. भाई इंडिया की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, इंडिया कैन बेसिकली 7,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है. इंडिया कैन बेसिकली वेव एनर्जी. वेव्स आर energy in motion. Simply the kinetic energy of wind is imparted to waves. Waves does not envisage movement of water, it envisages of energy. Again, India has huge potential for harnessing wave energy. मतलब बहुत पहले पीजो इलेक्ट्रिक को डेवलप, इलेक्ट्रिक were thrown in water, and when the waves used to back them, when the waves used to gush through them, the kinetic energy of the wave gets transformed into electrical energy. ये सोलर सेल नहीं होते, रख देते हैं ट्रांसड्यूसर्स, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म. जैसे धूप में रख दिया तो गेट्स चार्ज्ड, वैसे ही ना. बट अगेन, डिस्पाइट हैविंग सच लॉन्ग कोस्ट लाइन, immense potential for wave energy. गवर्नमेंट विजिंगम केरला में एक प्लांट बहुत पहले लगा था, तो पैदा होने से पहले. और एक प्लांट नैनकौरी आइलैंड एंड निकोबार में म्यूस पॉइंट, वहाँ लगा था पायलट प्लांट. उसके बाद कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ ही नहीं. अब गवर्नमेंट नीड टू इन्वेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेव एनर्जी. हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं. टाइडल एनर्जी, चलो हमारे यहाँ टाइड नहीं आते, लेकिन गल्फ ऑफ कैम्बे टाइडल पोटेंशियल का 90% पोटेंशियल गल्फ ऑफ कैम्बे में है. कम से कम हियर इट सम टाइडल प्लांट शुड
installed so that this tidal energy can fulfill the local needs of the region. हर regional energy source है, कम से कम at least it should be tapped for regional needs. Gulf of Cambay has huge potential for tidal energy, huge. इंडिया में मैक्सिमम 90% इंडिया का tidal potential गल्फ ऑफ कैम्बे में है. बट बहुत पहले एक प्लांट लगा था, पायलट प्लांट गल्फ ऑफ कच्छ में. इसके अलावा नो डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस. तुम नीति आयोग और मेक इन इंडिया सब देख लो ना, दीज आर completely ignored. These facets are, these are renewable sources of energy which require no investment once they are planted. Uh, Next energy is tidal energy, wave energy. हाँ, हाँ थोड़ा इन्वेस्ट किया है विंड एनर्जी. विंड एनर्जी को कहते हैं बिकॉज ऑन ओशन द वेलोसिटी ऑफ इज वेरी हाई, अनऑब्स्ट्रक्टेड कोर्स ऑफ ओशन. हाँ, विंड एनर्जी प्लांट्स वी हैव इंस्टॉल्ड ऑन coastal areas where we basically countries have planted because the velocity of wind is very high. Netherlands was the leader in terms of wind energy. Why? Because 50% of Netherlands is reclaimed from was below sea level. By constructing dikes and pumping out the water, Netherlands sea level से नीचे था, so velocity of wind was high. So in terms of total energy generated, Netherlands used to generate almost 95% energy from wind energy. Presently, India is also investing huge because wind turbines, from the aid of technology developed elsewhere, we are manufacturing turbines also. Up, China is the largest installed capacity in China, then USA, then Germany. Now India has become largest in terms of installed capacity, overtaking Spain. But this is only one source. विंड और सोलर के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? इवन इन बायोमास इन्वेस्टमेंट इज लीस्ट ना. जो थर्मल थर्मल एनर्जी बेसिकली न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड आर द लीडर्स. बहुत सारे थर्मल एनर्जी क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके जो जमीन के अंदर होती है ना, दैट एनर्जी व्हेन पासेस थ्रू द ग्राउंड वाटर, सब द वाटर, हॉट वाटर. इंडिया में भी कुछ जगह जियो थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्लांट लगे हैं. जैसे मानीकरण हिमाचल प्रदेश में एक प्लांट बनाया था, जैसे कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी हॉट वाटर से बिजली बनाते हैं. उग्गा वैली इन लद्दाख प्लांट इज देयर विच कन्वर्ट्स जियो थर्मल एनर्जी इनटू. ताता पानी इन छत्तीसगढ़. बट दीज आर पायलट बेसिस, कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं है इनका. मेकिंग अ प्लांट ऑन पायलट बेसिस इज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस वन थिंग, बट यूटिलाइजिंग इट ऑन कॉमर्शियल स्केल इज अनदर थिंग. थर्मल एनर्जी क्या है? हॉट वाटर जो निकलता है ना, it may be because of heating up of water, underlying water, because of magma or because of decay. Hot water that spouts up, that is used for generating electricity. Now, ocean current. Ocean currents basically like Gulf Stream alone कहते हैं, उसके पास इतनी energy है, it can fulfill the need of entire world. Gulf Stream. But with the present level of technology, it is not really viable. होता है potential, होता है economic viability. Don't have the technology to utilize it and electricity at every cost. Was about ये इंडियन गवर्नमेंट इज लाइकिंग बैंड डेस्परेटली. कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक वेव एनर्जी और दूसरा हमारा ओटेक एनर्जी दैट कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ, इवन इफ 70 से 50% नीड इज फुलफिल्ड बाय दीज टू, रेस्ट कैन बी फुलफिल्ड बाय विंड एंड सोलर. और जो बची कुछ तो उतना तो 10% तेल हम निकाल ही लेते हैं अपना, राइट. बट गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिवली परस्यूइंग दिस एजेंडा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना हमारी साइकी में नहीं है, हमारे बिजनेस क्लास ऑन्टरप्रेन्योर्स साइकी में. दे वांट टू गेन प्रॉफिट्स. मुकेश अंबानी, ये अडानी, दे कैन इन्वेस्ट हेविली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो दैट सेम गोज विद द स्टूडेंट. देयर पीपल आर लीस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बेस्ट माइंड्स नहीं करते. बेस्ट माइंड उससे पहले इंजीनियर डॉक्टर या कुछ बन जाते हैं. जो बचा रह जाता है वो कर. So this is something new. Best brains are required. Huge investment is required because research and development leads to innovation. And when you involve in innovation, go up in supply chain.
चलो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मेरीन रिसोर्स। नाउ मेरीन पॉल्यूशन। मेरीन pollution and cause of the pace at which the industrialization and economic development, ruthless exploitation of resources has been going on, has not left marine ecosystem untouched. All toxic chemicals and industrial waste are ultimately dumped into. Now this has adversely impacted, तुम देखो प्लास्टिक इस पे इतनी मिलती हैं, marine ecosystem has got adversely impacted by human activities, especially non-biodegradable material. So the rapid pace at which the economic development, industrialization, exploitation of resources has been going on has impacted deeply on marine ecosystem. So considering this, the nations of the world came together to curb marine pollution and to frame laws to regulate dumping of waste into sea. So this continuous dumping of potentially toxic waste and potentially toxic chemicals and industrial waste has led to considerable marine pollution. And you see, if any one of gets impacted, it in turn impact the existence of several other species, and this creates a crippling effect. Entire ecosystem begin to collapse. मैंने कहा भाई देखो, something has to be done. Curb marine pollution. The nations of the world came together at international level, frame agreements and convention, curb marine pollution. So they forged two agreements at international level. दो बड़े agreement हुए contain marine pollution. Curb marine pollution, regulate the use of sea. The nations of the world came together in the form of main convention. First was convention dumping of wastes at sea, 1970, London, also known as London Convention. Convention on dumping of waste at sea, 1972, London Convention, held in London, London Convention. Subsequently, in 2006, was replaced by 1996. We'll discuss. 2006 में this came into being in 1975. बना 72 में था, implement 75. Then it was replaced by 1996, was implemented in 2000. Second is UNCLOS, that is United Nations Convention Laws of Sea, 1994. 1994 distance back. Now first, उन्होंने एक शुरुआत at global level with earnest desire to curb marine pollution. उन्होंने कहा at global level these countries will come together and will prevent marine pollution because it's threatening marine ecosystem and ultimately threatening human existence on this planet. So this first convention on dumping of waste at sea, was directed towards preventing marine pollution at global level. These nations came together and for the first time they defined dumping. What comes under dumping? इससे पहले डिफाइन ही नहीं था कुछ. जहाज पुराना हो गया, लोग जहाज को तोड़ के खा देते थे. समुद्र कूड़ा डालने का एक जगह थी भाई. बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स तो मिल जाएंगे कंट्रीज में, समुद्र के अंदर तक जाते हैं प्लेटफॉर्म्स, वहाँ से पूरा डंप कर दिया. वो वेव्स होती हैं, वो वहाँ का वापस डीप में ले जाती है. कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता. जहाँ कोई ना देख पाए वो डंपिंग ग्राउंड है. तो पहले तो डंपिंग डिसाइड की गई. डंपिंग में उन्होंने कहा डंपिंग डेलिब्रेट डिस्पोजल
of toxic chemicals and wastes by way of vessels, एयरक्राफ्ट और प्लेटफॉर्म. भाई जहाज से ले जाके पूरा डंप कर देते थे, एयरक्राफ्ट से डंप कर दिया करके, या प्लेटफॉर्म से. तो इट डिफाइन डंपिंग एज डेलिबरेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. डंपिंग इंक्लूड डेलिबरेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन बाय वे ऑफ vessels, aircrafts and platform. Platform. uh, plat- Platform or disposal of vessels and platform itself into the sea. भाई जहाज से तुमने कूड़ा डाला 20 साल हो गए, जहाज पुराना हो गया, जहाज को भी समुद्र में डाल दिया. मतलब उन्होंने कहा डेलिबरेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय वे ऑफ वेसल्स, एयरक्राफ्ट, प्लेटफॉर्म और डिस्पोजल ऑफ वेसल्स एंड प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इनटू द सी. अभी तो आलंग, हमारा आलंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग सेंटर बन गया. भावनगर आलंग या यार्ड, वर्ल्ड की 30% शिप्स यहाँ अकेली तोड़ी है. यहाँ तो नहीं पाते लेकिन तोड़ लेते हैं. वर्ल्ड की 30% शिप्स, because it was banned. You cannot just throw the vessel into the sea by breaking it down. It is having numerous toxic chemicals. तो ठीक है भाई, तो पहला तो cannot dump toxic chemicals by way of vessels, or you can dump your old vessels into the second. In this convention, it was defined, वेस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. सम सर्टेन वेस्ट विच कैनॉट बी डम्प्ड एट ऑल, सर्टेन वेस्ट विच रिक्वायर स्पेशल डंपिंग परमिट. कुछ वेस्ट तो हैं जो डंप किए नहीं जा सकते, एंड अदर दोज वेस्ट दैट विल रिक्वायर स्पेशल डंपिंग परमिट्स. नाउ अब इस कन्वेंशन में धीमे धीमे जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें मॉडिफिकेशन आए. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1975, कन्वेंशन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी. 75 में when it was implemented, the lacunas were found. 1978 it was modified, 1980 it was modified, 1993 it was amended. अमेंडमेंट होते रहे इसके, कोई कंट्रीज लूप होल निकाल लेते थे, बार बार अमेंडमेंट्स होते रहे. As a result of these amendments, this protocol, Convention on Dumping of Waste at Sea, became more rigid. As a result of these amendments, dumping of low-level radioactive wastes was banned. Low-level radioactive waste अब आप डंप नहीं करते. Dumping of industrial waste was banned. And इसी जो प्रैक्टिस कॉमन थी, कूड़े को जला करके डाल देते थे, जला के वो थोड़ा रह जाता है. Incineration of waste was also banned. But they found that countries are not rigorously implementing it, and some of the nations were bent upon on preventing marine pollution because their entire economy was dependent on sea. भाई जो समुद्र पे डिपेंडेंट है, that country will be more concerned. So they, with change nature of approach, this protocol itself was replaced by 1996 का एक नया प्रोटोकॉल बनाते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं. कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी को रिप्लेस किया 1996. A changing approach keeping you led to the adoption of 1996 protocol. 206 में 2006 में ये इम्प्लीमेंट हुई. इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. पहले वाले में तो कुछ डंपिंग वंपिंग प्रोवाइडेड थी, इसमें कुछ मतलब इट वॉज वेरी रिजिड. It shows major change in approach among the nations regarding use of ocean as place for dumping. Now countries started seeing them as their backyard. जैसे नहीं, dumping allowed नहीं है किसी भी form. So much so, this protocol is much more restrictive as compared to the previous protocol that allowed dumping certain cases. ये इतनी strict है because when study was conducted, marine ecosystem getting adversely impacted on large scale. तब पुराना डंप किया हुआ है, वही मामला खत्म नहीं हो रहा, ये और डंपिंग चलती रही, will put the global economy, global environment, it will damage the global environment. So
दिस प्रोटोकॉल, पुराना प्रोटोकॉल तो चलो, सम टॉक्सिक केमिकल्स कैन बी वेस्ट इन डम्प्ड, सम कैन नॉट बी डम्प्ड। इसमें दिस प्रोटोकॉल कॉल्स फॉर appropriate preventive measures to be taken even if any waste is likely to cause harm. There is no conclusive evidence that the product being dumped into the sea, there is a cause and effect relationship. Even if it is suspicious apprehension that it may cause harm, it won't be allowed to dump. The onus lies on the person who is dumping it to prove beyond doubt that it will not cause harm. जैसे रेप केस में चेंज कर दिया ना, अब वो डंप करने वालों को प्रूफ करना होगा कि तुम जो डंप कर रहे हो वो नुकसान नहीं पहुंचा है। पहले क्या था, जो चेक कर लेते थे, हाँ ठीक ठाक है, डंप डंप कर लो। Now it was very restrictive. Protocol calls for appropriate preventive measures to be taken when waste or other material thrown into the sea are likely to cause harm. Even if there is any apprehension, slight apprehension, it won't be allowed to be dumped. That is, even when there is no conclusive evidence, even when I don't have any conclusive evidence टू प्रूव कॉज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड इफेक्ट, मतलब हम जो डंप हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कोई कंक्लूसिव, आई डोंट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंस दैट इट विल कॉज हार्म, बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन और सस्पिशन यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम डंपिंग। सेकेंड मेजर चेंज, polluter shall pay the cost of pollution. Polluter polluter shall pay the cost of pollution। मतलब जिसकी, जैसे पहले शिप ब्रेक होती थी ना, ऑयल स्पिल हो गया, दे यूज्ड टू रन अवे, नाउ polluter will be held responsible for pollution। Third, that was the most hampering element, third factor, जैसे we are 3 people, we have contracted, yes we will not dump toxic chemicals into the sea, but the fourth person, sir, but the fourth person who has not contracted, मतलब 3 लोगों ने pledge किया है we will not dump toxic chemical into the sea, but the fourth person who has not pledged, who is not abided by this agreement, the contracting parties, what they used to do, they used to transfer the toxic chemical to the fourth party which has not pledged, and they used to get it dumped by it, and they used to pay for it। तो इसमें बनाया गया, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शेल नॉट एक्सपोर्ट द टॉक्सिक केमिकल्स टू नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर बीइंग डम्प्ड इनटू द सी। ऐसा नहीं है उसने, वो मेंबर नहीं है इस कन्वेंशन का, तो उसको सप्लाई कर दिया कूड़ा, उसे डंप करवा दिया, तो ये नहीं चलेगा, पहले जो खूब चलता था। नाउ दिस कंटिन्यूड, लेकिन डंपिंग नहीं बंद हुई। तो इसी बीच लोगों को ख्याल आया, यार ओशियंस में डंपिंग क्यों हो रही है? जैसे हमने तो देखा है, लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा निकाल के सड़क के किनारे रख देते हैं, तो सड़क किसकी है? सड़क सरकार की है। सड़क, कूड़ा साफ किया बाहर फेंक दिया, जैसे चिप्स खाए गाड़ी में, पैकेट रह गया वो बाहर फेंक दिया, तो बाहर हमारी तो गाड़ी है ना, गाड़ी साफ बनी रहेगी। बच्चे करते हैं, चिप्स चिप्स खाते हैं, बाहर खिड़की से पैकेट फेंक देते हैं। तो लोग, तो इंटरनेशनली ये व्यू आया कि इफ दीज कंट्रीज आर गिवन सॉवरन राइट ओवर द एडजॉइनिंग सी, द वे दे आर हैविंग द राइट ओवर द लैंड, ऐसे ही इनको अगर ओशन भी कहा जाए ये सॉवरन है तुम्हारा, इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो तुम्हारे, ये जगह तुम्हारी, जैसे तुम्हारा लैंड है। इट वर्कड। यूएन क्लॉज, मतलब इट डिफाइंस द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल नेशंस with respect to use of ocean and its resources, and it holds them accountable for any pollution। भाई तुम्हारी जगह है, अब ये सी तुम्हारा है, तुम्हें दे दिया परमानेंटली और कोई नहीं लेगा, तो कंट्रीज आर हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट। जब तुम्हारा कह दिया, सरकार कह दिया बाहर की जगह भी तुम्हारी है, बाउंड्री बना लो, फिर तुम वहाँ कूड़ा नहीं इकट्ठा करोगे, फिर वहाँ से साफ करोगे। तो यूएन क्लॉज में इट डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल नेशंस with respect to use of ocean and their resources।
Now, it came into force in 1994. United Nations arranges for its meeting, but United Nations has no role to play in the implementation of its decision. International Maritime Organization, International Whaling Commission have a role in implementing the decisions of UNCLOS. UNCLOS was a path-breaking development because it enabled sovereign rights to coastal nation over the adjoining waters. बिल्कुल तुम्हारा है, केवल तुम्हारा और किसी का नहीं है. बहुत अच्छा लगा. तो लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, केवल हमारा है तो हम किसी को कूड़ा नहीं डालने देंगे. और खुद भी दे स्टार्टेड टेकिंग प्रिकॉशंस कि हमारा कोस्टल इकोसिस्टम खराब हो रहा है, our coastal ecosystem is getting adversely impacted. So the UN clause ये details a comprehensive regime of law and order in the sea. पूरी डिटेल में allocating rights and responsibility to individual nations. It contains entire constitution 320 articles. 320 articles हैं इसमें, which allocates rights and responsibilities, responsibility भी साथ में, to individual nations. इसमें important it is having UN clause, it is having 320 articles. Detailed regime of law and order. It has created a detailed regime of law and order in the sea by allocating rights and responsibility to individual nations, giving sovereign right to the nations over the adjoining. क्या important articles हैं? It has delimited, delimitation. हम पढ़ते हैं ना, हिंदुस्तानी मछुआरे पाकिस्तानी समुद्रों में चले गए, समुद्र में कोई लाइन तो है नहीं. श्रीलंकन वाटर्स, इंडियन वाटर्स, डिलिमिट हो गया है. ये तुम्हारा वाटर है, ये तुम्हारा वाटर है. डिलिमिटेशन. Control of environmental pollution means ocean pollution. Commercial and economic activities on the sea. You have right to conduct commercial and economic activities into the sea, in the sea. Fourth, scientific study, marine scientific research. You can conduct marine scientific research. You have the right to control environmental pollution, sea pollution. You have the right to carry on economic and commercial activities on the sea. And fifth provision, settlement of disputes with regard to oceanic matters. मतलब ओशन के मैटर में कोई डिस्प्यूट होती है तो देयर इज डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. So this was a fundamental change. The coastal nations were having sovereign rights. उनके rights कहाँ तक हैं delimit कर दिया गया. और basically they had the right for controlling environment pollution, conducting marine scientific research, economic and commercial activities at sea. तो ऐसा हुआ. They defined, suppose ये हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन है. There is a baseline. लो टाइड लाइन को बेस लाइन कहते हैं. तो जैसे ये महानदी डेल्टा है, चिल्का लेक है, पुली कैट लेक है, ऑल रिवर वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स हैं. दे all water bodies on the landward side of baseline were termed as internal waters. Internal water क्या है? जो लो टाइड लाइन पे सी लेवल होता है ना, लो टाइड लाइन पे, that was taken as baseline. All water bodies on the landward side of baseline were put into the category of internal waters like lagoons, deltas, freshwater lakes, rivers. They are internal waters, and the coastal state has sovereign right to set rules, regulations, use of resource, conducting marine scientific research, economic and commercial activities, control environmental pollution. It can frame laws, सब कुछ. No foreign vessel has any right to intrude into the internal waters of any other country. From baseline up to 12 nautical mile is territorial seas. This is territorial sea or territorial water. Again,
The coastal state has sovereign right over territorial sea, just like on its land. Internal water, territorial sea, पूरा sovereign right है. It can set rules, regulation, frame laws, conduct marine scientific research, control environmental pollution. No foreign vessel can move inside the territorial sea. तुम्हारे territorial sea के अंदर दूसरी vessel नहीं आ सकती without your permission. हाँ, तुम परमिशन दो तो अंदर तक आ जाएगी, मतलब विदाउट योर परमिशन. ऐसा नहीं घूमते टहलते जा रहे हैं चलो अंदर से बोले ना. टेरिटोरियल सी में दे आर नॉट अलाउड. दे आर नॉट अलाउड इन टेरिटोरियल सी. हाँ, इफ योर टेरिटोरियल सी लाइज इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट. अब जैसे ये है, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है. इनका टेरिटोरियल सी, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का लाइज इन टेरिटोरियल सी ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया. और कोई ऑप्शन ही नहीं है निकलने का. इफ द टेरिटोरियल सी लाइज इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट, जैसे मलाक्का स्ट्रेट है, दिस लाइज इन द टेरिटोरियल सी ऑफ दिस इंडोनेशिया एंड मलेशिया. अब यहां से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. इफ योर टेरिटोरियल सी लाइज इन अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट, then foreign vessels, merchant vessels, all these vessels have the right of innocent passage. Merchant vessels have the right of innocent passage, and military vessels have the right of transit passage. भाई इनको नहीं रोकोगे. What is innocent passage? अगर तुम्हारा टेरिटोरियल सी कहीं किसी स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है स्ट्रेट की कि उसके अलावा कोई निकलने का ऑप्शन ही नहीं है, देन यू कैन नॉट स्टॉप द मूवमेंट. एंड द मर्चेंट शिप्स आर गिवन द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज एंड मिलिट्री क्राफ्ट्स आर गिवन द राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज. इनोसेंट पैसेज और ट्रांजिट पैसेज हियर मींस मूविंग इन अ कंटिन्यूअस एंड एक्सपीडिशियस मैनर. लगातार चलते रहना और रुकना नहीं है. in such territorial sea which are in strategic strait, moving continuously, you cannot stop over there. That is moving continuously without stopping. That is expedition. Moving continuously and expeditiously through that narrow strait, so that you do not jeopardize good order, peace, and security of that state. State must not feel threatened. है ना. अंडर सी वेसल्स जैसे सबमरीन्स हैं, दे हैव टू अपीयर ऑन द सरफेस एंड दे हैव टू शो देयर नेशनल फ्लैग. साउथ चाइना सीज में 5 अमेरिकन पकड़े थे चाइनीज ने, फोटो खींचते हुए नीचे, बोले यहाँ क्या करे बाहर आओ. नहीं, इफ़ यू आर वायलेटिंग द लॉज, वो साउथ चाइना सी में फोटो खींच रहे थे नीचे, उसको पकड़ के बाहर निकाला. और अमेरिका वॉज एट रिसीविंग एंड, कुछ नहीं कर सकता. यू आर स्पाइंग, स्पाई कर रहे हो तो दिस इज लीगल. तो जो अगर आपका टेरिटोरियल सी किसी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट में पड़ता है, तो योर अंडर सी वेसल्स विल हैव टू अपीयर ऑन द सरफेस, दे विल हैव टू शो द नेशनल फ्लैग, दे विल हैव टू मूव इन अ कंटिन्यूअस एंड एक्सपीडिशियस मैनर, so that you do not threaten, jeopardize peace, good order, and security of coastal state. If coastal state feels threatened, then it has right to suspend the movement in specific area for specific time. पूरे में बंद नहीं कर सकता. तुम तो पूरा ट्रेड ही बंद कर दोगे तो दुनिया का ट्रेड ही बंद हो जाएगा ऐसे तो. मतलब जब इंडोनेशिया, सुमात्रा थ्रेटेंड है अगर किसी बात से, if the coastal state is threatened, it can temporarily suspend the movement of merchant ships or military craft for specific time period, not permanently. Then further 12 nautical mile, this is known as contiguous zone. Further 12 nautical mile, it is known as contiguous. nautical mile होता क्या है? Distance of 1 nautical mile is the distance covered by 1 minute of latitude. The distance covered by 1 minute of latitude is 1 nautical mile. 1 nautical mile. 1 डिग्री लैटिट्यूड में 60 मिनट्स होते हैं.
60 मिनट्स। 1 डिग्री लैटिट्यूड में जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है, इज इक्वल टू 60 मिनट्स। यानी कि 1 मिनट में जो डिस्टेंस होती है वो 111/60, 1.86 किलोमीटर। वन मिनट ऑफ 1 मिनट में 1 नॉटिकल माइल इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड। तो वन मिनट ऑफ लैटिट्यूड कवर्स 1.86 किलोमीटर। इसके बाद एक कंटिगुअस जोन। अगेन द कोस्टल स्टेट हैज सॉवरन राइट। कंटिगुअस जोन एक्सटेंड्स फॉर 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन और 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम टेरिटोरियल सी। Here again, the coastal state was given sovereign right. Why? It was found that most of the illegal immigrants or smuggling take place in contiguous zone. क्योंकि टेरिटोरियल सी में जो देवी कोस्ट गार्ड होते हैं, दे गार्ड इन टेरिटोरियल सी, बिकॉज इफ यू मूव अवे द डिस्टेंस बिकम इमेंसली लार्ज। बहुत ज़्यादा दूर तुम गार्ड नहीं कर सकते, तुम चक्कर ही नहीं लगा पाओगे पूरा, तब तो घुस जाएगा। So you have to be close to the coast. Most of the territorial coast guards of all countries are found in territorial sea. तो contiguous zone यहाँ पर शिप से आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स और यहाँ से स्टीमर से घुस जाते हैं अंदर। देखो पाकिस्तान से घुस आए थे 26/11 में। जैसे स्मगलिंग भी यहाँ होती है, यहाँ से तुम शिप से आए, यहाँ स्टीमर से आए, एक्सचेंज किया माल, चले गए, पास जाओगे तो मतलब here contiguous zone worldwide it was found that maximum illegal immigration and smuggling was done in contiguous zone. To curb it, the coastal state was given sovereign right. भाई तुम हैंडल करो इसको। Then third, the coastal state, UNCLOS says, shall have sovereign right over the entire continental shelf, because continental shelf is the natural extension of land. Or if your continental shelf is not broad, at least up to 200 nautical mile. A coastal state shall have sovereign right over the entire continental shelf or at least 200 nautical mile. This distance of 200 nautical mile is known as exclusive economic zone. Exclusive economic EEZ. मतलब if your continental shelf is not broad, still you will have the sovereign right up to 200 nautical mile. But if your continental shelf is broad, that doesn't mean giving you indefinite right over the shelf. If your shelf is broad, still the maximum extent over which the coastal state shall have sovereign right is 350 nautical miles from the baseline. तुम्हारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ भले ही 1000 किलोमीटर चौड़ी हो, इसका मतलब नहीं है यू विल हैव द सॉवरेन राइट अप टू 1000 किलोमीटर. इन नो केस द सॉवरेन राइट शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 350 nautical mile. Even if your shelf is narrow, you will have at least the sovereign right up to 200 nautical mile. मतलब the coastal state has exclusive right. That means to the exclusion of others. The coastal state has exclusive right over the non-living or the mineral resource found in its entire exclusive economic zone. हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हमारा जो राइट है, हमारी शेल्स ब्रॉड है ना, तो आर राइट इज मोर देन 200 nautical mile. मतलब कोस्टल स्टेट शैल हैव एक्सक्लूसिव राइट ओवर द नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द ओशन up to exclusive economic zone. No other state can exploit the resource from your exclusive economic zone. The state coastal. हाँ, if you want to exploit the resource, suppose India's continental shelf is broad. So in our case, we have exclusive economic right up to 350 nautical mile. But in this case, if you are exploiting any resource beyond 200 nautical mile, and before, ये है इंटरनेशनल सी,
इंटरनेशनल सी, उसमें भी माइनिंग कर सकते हो, बट यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. If a country is having wide continental shelf and it is exploiting resources beyond 200 nautical mile but before 350 nautical mile, then it will have to share a part of surplus with international seabed authority. तुम्हें थोड़ा सा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को देना पड़ेगा. You can even exploit the resources in high seas. The share of international seabed authority will increase significantly. भाई यहाँ तक तो तुम्हारा राइट था 350 नॉटिकल माइल, लेकिन 200 से ज़्यादा अगर तुम एक्सप्लॉइट करते हो ना, तो तुम्हें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से कुछ शेयर करना पड़ेगा. उनका क्या, जिनकी कोस्ट ही नहीं है जैसे भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, उनके लिए भी प्रोविजन है. लैंडलॉक स्टेट्स शैल नॉट बी टैक्स्ड फॉर एसेस टू द सी. भाई कोई भी कोस्टल स्टेट, आप अफगानिस्तान से ईरान टैक्स नहीं मांग सकता. वो टैक्स मांगता भी नहीं है, वो कहता है मैं सिक्योरिटी रीजन से नहीं आने दूंगा, लेकिन टैक्स नहीं ले सकते. और लैंडलॉक स्टेट कैन नॉट बी टैक्स्ड, शैल नॉट बी फोर्स्ड टू पे चार्जेस टू हैव एक्सेस टू द सी. दे विल हैव फ्री एक्सेस टू द सी. Coastal landlocked states cannot be charged by the neighboring coastal state for having access to the sea. Secondly, landlocked state has equal right in entire exclusive economic zone with respect to exploitation of living resources. जितनी मछली चाहे उतनी पकड़ो. But landlocked countries are they never consume seafood. अफगानी को कभी मछली खाते हुए देखा है? सवाल ही नहीं उठता. अफगानी मछली दूर दूर का रिश्ता नहीं है. लेकिन ऑन अकॉर्डिंग टू लॉ, अ लैंडलॉक स्टेट ऑन इक्विटेबल बेसिस कैन has the right to exploit living resources in entire exclusive economic zone of the neighboring coastal country. पूरी एक exclusive economic zone में it has equal right for exploiting living resources. अच्छा, initially it was said कि these laws, if you see Iceland, Greenland, तो इनकी शेल्फ देखोगे ना, पूरा आर्कटिक ओशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है. their continental shelf is so wide. Initially they extended this right over the entire continental shelf. Subsequently tropics में कहाँ शेल्फ ब्रॉड होंगे? जहाँ ग्लेशिएशन हुआ है. हाई लैटिट्यूड्स में शेल्फ ब्रॉड है, ट्रॉपिक्स में शेल्फ नैरो है. Therefore later it was amended कि भैया नहीं, मिनिमम 200 नॉटिकल माइल्स तो दो. किसी की तो शेल्फ है ही नहीं. अफ्रीका के कोस्ट में शेल्फ ही नहीं है, तो उसका राइट ही नहीं होगा. इसमें ये भी क्या कहता है, इंटरनेशनल सी. व्हाट अबाउट इंटरनेशनल सी? इन्होंने कहा था इंटरनेशनल सी और हाई सीज यू हैव द राइट टू एक्सप्लॉइट. इसके लिए यू हैव टू बोथ टेक परमिशन एंड एज वेल एज यू हैव टू इन्वेस्ट इन एक्सप्लोरेशन. जैसे चाइना ने एक्सप्लोर्ड अ लार्ज एरिया ऑफ इंडियन ओशन, तो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी हैज गिफ्टेड land to China or sea floor to China. Likewise, India also conducted research in large ocean, so India was also gifted sea floor by UN, International Seabed Authority, sea floor. So it also depends how much research and investment you are making in high seas. High seas में investment के basis पे you can exploit the resources. ठीक है, this was all about. Tomorrow we'll continue with the next topic.